सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हु इज ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। बेसिकली कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को में है, इसमें आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर लिखा है आपका चंपानेर पभागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, आपका छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, आपका स्मलापुरम सान टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। इसमें से आपको जो ऑप्शन दिया गया, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं एनटीए नेट में, और इस तरह क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इसमें गलती ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम गलत जगह में क्लिक कर देते हैं और उसमें उसके कारण हमारे आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन वन में दिया गया है, क्या आप एक दो तीन और चार ये आप सही मानते हो, या ऑप्शन एक तीन और चार को सही मानते हैं, या दो और चार को मानते हैं, या एक दो तीन को मानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि हुईज ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज, अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड क्या है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं, सान टेम्पल, आपका स्मलापुरम, आपका छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, आपका चंपानेर प्रभाग आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका जो एक दो तीन चार सभी है एक्चुअली उसमें। तो आपका बेसिकली दिस फॉलोइंग आर द इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को आर चंपानेर प्रभागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, स्मॉलपुरम एंड सान टेम्पल। बोथ पूरा सभी जो है वो आर्कियोलॉजी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो यूनेस्को है उसमें है। तो इसका ऑप्शन वन जो है सही जवाब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें आपका चंडीगढ़ दिया गया है, पुडुचेरी दिया गया है, और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भी दिया गया है, और लक्षद्वीप दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताऊं जो सही आंसर है वो है अंडमान निकोबार आइसलैंड। क्यों हम बोलेंगे इसको, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 572 आइसलैंड। आपको जानते होंगे 500 मतलब 572 आइसलैंड से बनी हुई है, एंड द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, एंड ऑल्सो इज वेरी India with the average area 8,249 square kilometer, and they are situated between 6 degree and 14 degree north latitude, and also 92 degree and 94 degree east longitude। तो इसको आपको याद रखना होगा। बाकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइन्स ऑफ द इक्वल प्रेशर ऑन ए मैप आर known as isobars, and widely spaced isobar indicate a high pressure gradient basically and the high wind speed, and the pressure gradient force act the parallel to the isobar, and also which of the statement given above is correct। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि दे आर फॉलोइंग स्टेटमेंट वन टू थ्री एंड ओनली वन इज करेक्ट, एंड ओनली वन एंड थ्री इज करेक्ट, ओनली टू एंड थ्री इज करेक्ट, and only 2 and 3 is correct, and all these correct। So definitely must carefully read again and again this question minimum 2 times when you will give their NT NET exam। There are first of all one statement, the line of equal pressure on a map are known as isobar, and widely spread isobar indicate a high pressure gradient and high wind speed। So definitely the pressure gradient force act the parallel to the isobar। So definitely there are the only only one is the correct answer। The pressure gradient force is generated by the pressure difference between the 2 points. The isobar are lines that show the equal pressure, and closely spaced isobar indicates the high pressure gradient and high wind speed। So widely spaced isobar and indicate the low pressure gradient and low wind speed,
and also direction of force is the pressure, and gradient force act and perpendicular to the isobar. So the definitely their answer one only is the correct answer. So another question, the consider the following statement. Statement one, in the Indian Ocean, the marginal sea are the less in number than the Pacific and the Atlantic Ocean. And number two statement, they are Mozambique Channel. Basically, Mozambique Channel and Red Sea and Baltic Sea are the marginal sea of the Indian Ocean. And also the average depth of the Indian Ocean is 4,000 meter. And four, there are the Indian Ocean is the third largest of the ocean after the Pacific and Atlantic. Very interesting question. There, who is of the above given the statement are correct? Basically, this type of question is very important for NTA NET. वेलकम टू ऑल, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी अनुवाद। अगर आप नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल और बेल ऑल जरूर प्रेस करें ताकि नया शेड्यूल आपके पहला आपके मोबाइल में पहुंचेगी। तो इस तरह क्वेश्चन में पहला एक दो तीन चार जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रही हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन थ्री, अर्थात एक तीन चार। देखिए यहाँ पे एक तीन चार जो है सही जवाब है, एक तीन चार, अर्थात इन द इंडियन ओशन the marginal sea are less in number than the Pacific and Atlantic Ocean. And number three, the average depth of the Indian Ocean is 4,000 meters. It is the correct. And four, the Indian Ocean is the third largest ocean after the Pacific and Atlantic. So there are the correct answer one, three, and four. Basically, the Indian Ocean is smaller than Pacific and Atlantic. भारत के जो हिंद महासागर है वो Pacific Ocean, Atlantic Ocean से छोटा होता है, real extent, and is bounded by on all the sides by the Asia in the north and east, Africa is the west, and Antarctica in the south. And the average depth of Indian Ocean is 4,000 meters also, and the marginal sea of the Indian Ocean are less in the number than the Pacific and Atlantic Ocean. And it's significant the marginal sea are Mozambique Channel and Red Sea and Persian Gulf, Andaman Sea, Arabian Sea, and Bay of Bengal. So definitely option 3 is the correct answer, where 1, 3, and 4 is the correct answer. So another question is very important. Consider the following statement. There are the four statements. Carefully listen. Surface temperature. Surface temperature of the ocean are controlled by warm and cold currents. Number two statement, warm currents raise the temperature of the affected area. And number third statement, the Gulf Stream rise the temperature near the eastern coast of the North America. And number four statement, the Gulf Stream is the current of Pacific Ocean. So in this type of question is not only easy but carefully read. There are the statement 1, 2, 3, 4, and basically which of the above given the statement are correct. Only one and only two and only 1, 2 and 3 must will comment their live chat. वहाँ पे लाइव चैट ऑन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए। सीमा साहू वेलकम, मोहियम टंडन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको जो चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम इज ए करेंट ऑफ पैसिफिक ओशन, गल्फ स्ट्रीम प्रशांत महासागर का धाराएं हैं, या गल्फ स्ट्रीम तापमान जो है वो नियर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एंड वार्म करंट जो उसमें करंट होते हैं, धाराएं होते हैं, वो तापमान इफेक्टेड करते हैं, या सरफेस तापमान द टेम्परेचर है ऑफ द आर्क कंट्रोल्ड बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स. सो डेफिनेटली द आंसर ऑप्शन 3, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन आर कंट्रोल्ड बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स. मतलब जो धरातल के हमारे जो करंट है, धारा है, वो गर्म और ठंडी करंट की वजह से हैं, और वार्म करंट्स raise the temperature of the affected area, and while the cool currents lower than the temperature, and warm current is the Atlantic Ocean, and the Gulf Stream raise the temperature near the eastern coast of North America and the western coast of the Europe. So there is no relation of the Gulf Stream and Pacific Ocean. So definitely their option 3 is the correct answer, 1, 2 and 3. So there are another question, who is of the following Indian state broadly as the large as the European nation Poland? Very interesting question, carefully listen.
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, भारत के कौन से स्टेट है जो लार्जली ब्रॉड द यूरोपियन नेशन पोलैंड के उसमें बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगर आपको पता है जरूर कमेंट करेंगे। कौन से स्टेट है भारत के जिसमें लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। डेफिनेटली देयर आर द मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश इज द ब्रॉड एज ए लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड। बेसिकली for the Madhya Pradesh means middle province basically, and it is the located in the geographic heart of India. भारत के heart of India कहा जाता है एमपी को, बीच में है, and except for the valley of the Narmada and the Tapi river, and Madhya Pradesh consists of the plateau with the main elevation of the 1600 feet above the sea level, and interfaced with the mountain also there Vindhan and Satpura range, you know। विंध्यन सातपुरा जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे नर्मदा तापी जो वैली है वो भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के हार्ट, भारत के हार्ट कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत के बीच में है मध्य प्रदेश। अनदर क्वेश्चन हम चलेंगे वहां पे, व्हाट इज द कॉल्ड फॉर द केमिकल हु इज एमिट विद द वेनाइल फ्लोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पैथोजेंस, विनाइल ऑक्साइड एंड phthalates and chronines. Basically, it is the correct answer. It is very easy question for due to the addition of the condition. Option 3 is the correct answer. And environment, it is the discovered that children who live in home and with vinyl floors and which can emit the hazardous and chemical called the phthalates, and it is the develop sign the ostims in kites basically। and social geography question actually क्या है, हम सोशल जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और आज इस सेशन में सोशल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी के जो एमसीक्यू होते हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। काफी टफ टॉपिक है और एनटीए नेट में काफी सारा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं या अगर आप एनटीए नेट देने जा रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारे चैनल में, अगर नया है आप जरूर विजिट कीजिएगा। Which one of the following cause harm to human health? Very interesting question। Organic farming and using of pesticides, using of solar vehicles, using of protecting forest। Very interesting question। हार्म ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल कौन सा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है हार्मफुल, या यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है, ज्यादा पेस्टिसाइड के यूज होता है, यूजिंग ऑफ सोलर व्हीकल्स एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर इज यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इट इज द हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। एक्चुअली जब हम खेत में ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल है, मतलब हार्मफुल है। Basically pesticide can harm to human health if they use in exceeds the proportion in the environment, and pesticide are international toxic and substance like the various disease like the cancer, defects and malnutrition and other the health problem due to using the pesticides। So correct answer is option 2। So there are the another question, human health can be divided into internal factor and external factor। ये ट्रू है कि फॉल्स है, जरूर कमेंट करें। ह्यूमन हेल्थ, जो मनुष्य का हेल्थ होते हैं, कैन बी डिवाइड इनटू इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ये सही है कि गलत है, जरूर कमेंट करें। ह्यूमन हेल्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इट इज ट्रू। बेसिकली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Basically the two factor affecting the human health are internal factor and external factor। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है? प्लीज लाइव चैट में लिखें। the factor such as the such as the malfunctioning basically of the body parts and malfunctioning of immune system, immunity जो system है, and genetic disorders and which exist within the human body are called the internal factor। क्योंकि human body में internal factor भी होते हैं और आपका outer जो है वो भी होते हैं, तो are called the internal factor। and heart attack and kidney fail etc are the few example of external factor। so internal factor and external factor both are important, so they are definitely true।
And another question, what is the other name for infection disease? Very interesting question. What is the other name for infectious disease? Basically, non-communicable disease, communicable disease, and non-transferable disease, and hereditary disease. There are very interesting. There are four options: a non-communicable disease, and communicable disease, and non-transferable disease. So definitely, this answer is communicable disease. Basically, infectious disease, also known as transmissible disease, such as or communicable disease, and comprise clinically illness and resulting from the infection and presence and growth of pathogenic biological agents. So there are the correct answer option 2, communicable disease is the correct answer. मेरा आवाज आ रही है? Next, another question. uh, what is what is called the term which refer to an unhealthy full intake of dietary nutrients? Very interesting question. They are healthy food, fuel food, malnutrition, nutrition food. And in this question, what is the called the term which refer to unhealthy intake? Basically यहाँ पे याद रखना होगा unhealthful intake of dietary nutrients basically. So the definitely option 3, malnutrition. Basically the term malnutrition refer to a unhealthy full intake of the dietary nutrients. Basically malnutrition may arise with inadequate or overbounded and food intake and imbalance of dietary nutrients or utilize the food we eat basically. So there are the another question, which one of the following is a result of high exposure of radiation? Very interesting question. which of the which one of the following is a result of high exposure of radiation? High exposure radiation, basically loss of uh, white blood cell and hair loss, decay, and leg fracture. Basically their correct answer, loss of white blood cell. Basically their high dose of radiation can be harmful. And also in this the medical geography related question or the event, it cause fatal of the human and also the damage environment, and does above the 100 rems usually cause the first sign of radiation. So basically loss of white blood cell and happens due to more exposure to radiation. So definitely one is the correct answer. And a very interesting question, how do pollutants reach the humans? Very interesting. How do pollutant reach humans? Basically by external factor के कारण ह्यूमन बॉडी में पॉल्यूशन ज्यादा ये होती है, बाय इंटरनल फैक्टर होती है. एंड pollutant never reach to humans, and there is nothing called to the pollutant. Sorry, very interesting question for you. Definitely their answer is why the external factor is the correct answer. Pollutant reach the humans and through the food we eat, and that the water we drink, पानी हम पीते हैं, air we breathe, हम सांस लेते हैं, and injure our health in both the immediate and long listing way. So there are the external factor is very important for pollutants. And another question, how many percentage of water approximately the present in human body? आप जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रतिशत जल है हमारे मानव शरीर पर. हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी है, जरूर कमेंट करें. इस तरह क्वेश्चन आपके सामने है और काफी इजी क्वेश्चन है. आपको बताना होगा कि कितने प्रतिशत पानी यहाँ पे मानव शरीर में है. लाइव चैट ऑन है, जरूर कमेंट करेंगे. Yes, basically they are 70%. The human body is mostly consists of 70% of water, and only 2.5% of the water on the plant and drinkable, and also become clear sense. Our body consists of 70% water, and protecting our water supply is so important. So 70% water, very interesting. Must will carefully listen.
And another question, who is one of the following is an effect due to environmental pollution for human health? Very interesting question. Which one of the following is the effect ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण जो है ह्यूमन हेल्थ पर हो रही है, इसमें क्या कारण है? इंक्रीज इन द मेल फर्टिलिटी, decrease in the Carcinogen cell, and decrease in the mental trace, and decrease in the male fertility. Very interesting question. यहाँ पे जो आंसर है वो है decrease in the male fertility is this the correct answer. Male infertility has been linked to the pesticides, air pollution, exposure to lead and household flame, and retrained there are the surfaced surfactant and water pollutant, and also continuous exposure for such environmental pollution will lower the sperm. And so definitely there are the option 4 is the correct answer. Another question, true false, there is a link between the environment and human health. Very interesting question. There is link between the environment and human health. It is the true and false. Definitely they are true. Basically there is a direct link between the environment and human health. ये मानव जीवन पर यहाँ पे पर्यावरण के साथ ह्यूमन हेल्थ तो है ही, and we harm our environment I many way, it come back to haunt us in the form of sickness and death, and the more we cause the trouble and disturb the environment, and the more we suffer from the disease. So definitely it is the true. And another question there, the for transporting large quantities of crude oil on the land. Very interesting question. Over long distance, the most economical mode is the by pipeline, by rail, by the road trunks, and by the river. A very interesting question. For the transporting large quantities of crude oil, जो लैंड पे हम तेल को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, द मोस्ट इकोनॉमिकली मोड कौन सा रहेगा? द पाइपलाइंस, रेल में भेजना, बास में भेजना, रोड में भेजना, नदी के द्वारा भेजना। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है पाइपलाइन। आपको कमेंट करना चाहिए क्योंकि लाइव चैट ऑन है, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर द ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटी, जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह ऑयल को मतलब तेल जो है उसको हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं भूमि के ऊपर से, तो बास में, ट्रक में, ट्रेन में ले जाने के अच्छा पाइप लाइन में सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पाइप लाइन आंसर सही है। ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस द मोस्ट इकोनॉमिक मॉडल इज बाय द पाइप लाइन, और pipeline are generally the most economically way to transport and large quantities of oil। बहुत ज्यादा मात्रा में तेल एक जगह से दूसरे जगह हम भेज सकते हैं। रिफाइनरी ऑयल प्रोडक्ट, नेचुरल गैस and land, for example the 2014 pipeline transport of the crude oil cost $5 per barrel and white transport. So pipeline is the correct answer. Another question, which of the following state is the member of सेवन सिस्टर? प्लीज कमेंट करें कौन सा स्टेट को हम मेंबर सेवन सिस्टर का मेंबर कहा जाता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। यहाँ पे सेवन सिस्टर जो है हम किसको बोलते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर? yes, it is the answer is Tripura. Odisha basically is the member of seven sister, and seven sister include the Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Assam. So definitely the Tripura is the correct answer. And next another question, name the estuary on the border of the India and Pakistan. Very interesting question. इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई दूसरे को रिलेटेड करते हुए। एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को हम क्या बोलते हैं? डामन क्रेक, सैर क्रीक, करवट क्रीक एंड मैंडोवी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज द राइट आंसर, सैर क्रीक. Sar Creek is a estuary between the Gujarat state and the Idal and the Sindhu province, Pakistan, and dispute that between India and Pakistan is mainly because of the presence of high rivers there, oil and gas also. So their Sar Creek is the correct answer. And another question, which country is not a member of Bay of Bengal initiative for multi sectoral
technical and economic corporation. Very interesting question, carefully listen. Which country is not, they are very interesting here. The is not option आपको देखना होगा, is not a member of Bay of Bengal. Basically Thailand, Myanmar, India and Pakistan. And the right answer is the Pakistan, because Pakistan is not a member of Bay of Bengal initiative for multi sectoral technical and economic corporation. So there were WAMSTEC was established on the 6th June 1997, is the international organization and involving countries of South Asia and Southeast Asia, and it includes the Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal also. So it's very interesting. And next another question, the India state of Sikkim does not share a border with who is neighboring country. Very interesting question. Nepal, Bangladesh, Bhutan, and China. The India state of Sikkim question must be read there two times. The Indian state of Sikkim does not share a border with who is the neighboring country. Nepal, Bangladesh, Bhutan, and China. So, yes, that definitely the Bangladesh is the correct answer. The Indian state of Sikkim does not share a border with the Bangladesh, and Indian state of the Sikkim share the border with the only three countries, China, Nepal, and Bhutan. So, definitely the Bangladesh is the correct answer. And next, another question: how many Indian states share their boundaries with Nepal? नेपाल के साथ कितने स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन स्टेट, भारत के कितने सारे जो स्टेट है, राज्य है, वो नेपाल बॉर्डर को बाउंड्री शेयर करते हैं? 3 स्टेट, 4 स्टेट, 8 स्टेट, 5 स्टेट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर 5 स्टेट है। 5 इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विद द नेपाल। इंडियन स्टेट हैविंग बॉर्डर विद द नेपाल: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल के सीमा में ये सब स्टेट है, याद रखेंगे। नेपाल के सीमा में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। With which of the following country India has a land dispute near the Taiwan? Very interesting question. They are Pakistan, China, Afghanistan, या Bangladesh. With which of the following country India has a land dispute near the Taiwan? Pakistan, China, Afghanistan, Bangladesh. Yes, the China is the correct answer. Taiwan basically is located in the state of Arunachal Pradesh and India, and it is the separate from China by Macmillan Line. And however, China considers the region as the dispute land and deny this, acknowledge the McMahon Line as the international territory, also their international boundary. So China is the correct answer. Next, another question: in India, economically exploitable lignite deposit. बेसिकली लिग्नाइट डिपॉजिट इंडिया इकोनॉमिकली ज्यादा है, इसमें नेवेली कहाँ पे है? नेवेली तमिलनाडु, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, तालचेर उड़ीसा या झरिया बिहार। जरूर कमेंट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हमने यहाँ रखे हैं कि कौन सी इकोनॉमिकली एक्सप्लोटिंग करता है लिग्नाइट डिपॉजिट में भारत में, वो है यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है नेवेली तमिलनाडु या सिगरनी आंध्र प्रदेश या तालचेर उड़ीसा या झरिया बिहार। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली देयर आर द राइट आंसर नेवेली तमिलनाडु। लिग्नाइट सबसे ज्यादा है यहाँ पे। इंडिया इकोनॉमिकली एक्सप्लोरेबल देयर आर द लिग्नाइट, and lignite deposit occur at Neyveli. Basically Tamil Nadu it annually produce about the 30 million tons and lignite from ओपन कास्ट माइन। यहाँ पे जो है ज्यादातर ओपन खुला है माइंस, और बेस्ट तमिलनाडु एंड साउदर्न इंडिया एंड द Barsingsar, Bikaner district also of Rajasthan state, and so it is carefully remember. And another question: in who is one of the following island of India is an active volcano found? भारत में कहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं?
इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड, कौन से द्वीप में, कौन से जो आइलैंड है वहां पे एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं? कार निकोबार आइसलैंड में, कैनरी आइसलैंड में, बैरन आइसलैंड में, और माया वंडर आइसलैंड में? तुरंत कमेंट करें, लाइव चैट ऑन है। Which one of the following island of the India is an active volcano found? There are the definitely they are barren island. Basically, option 3 is the correct answer. Barren Island, a position, basically position of India in the Andaman Sea, about 130 kilometer northeast of Port Blair. In the Andaman Island is the only historical active volcano along the northeast trending that volcano and extremely between the Sumatra and Burma, Myanmar basically. And the 354-meter high Iceland, it is the emergent summit of the volcano that rise from depth of about 2250 meters. So definitely their barren Iceland is the correct answer. Another question, the Khasi and Jayantia Hill. खासी एंड जयंतिया हिल आर लोकेटेड, कहाँ पे है खासी और जयंतिया हिल? बताइए मेरे को कि कहाँ पे खासी और जयंतिया हिल है। अरुणाचल प्रदेश में है या मेघालय में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है? कहाँ पे है? द खासी एंड जयंतिया हिल आर लोकेटेड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। खासी जयंतिया मेघालय, यस मेघालय पे है। द खासी एंड जयंतिया हिल आर द माउंटेन रीजियन दैट वाज mainly part of the Assam and Meghalaya. And Meghalaya was previously part of the Assam, but on the 21st January 1972, the district of Khasi and Garo and Jaintia Hill become the new state of Meghalaya. So it is very interesting, must carefully remember. Next, another question, who is one of the following Himalayan pass was reopened the around in the middle of years 2006 in the facility trade between the India and China, basically Changla, Jarala, Nathula, Sipkila. So very interesting, there are the passes Darra, यहाँ पे कौन सा हिमालयन पासेस जो है वो रीओपेंड है अराउंड द मिडिल ऑफ ईयर 2006, फैसिलिटी द ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना में जो दर्रा है बेसिकली पासेस है वो कौन सा है? Yes, there are the Nathula Pass. Nathula, basically Himalayan Pass was reopened around in the middle of years 2006 to facilitate trade between the India and China. भारत और चीन के ट्रेड कॉमर्स के लिए नाथुला पास को इस्तेमाल किया गया है 2006 में, तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, द हिमालय आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। आप जानते होंगे कि जो हिमालयन रीजन है जनरली डिवाइड इनटू द 3 रेंज व्हिच डू नॉट इंक्लूड, कौन सा रेंज जो है वो इंक्लूड नहीं है? शिवालिक, ग्रेटर हिमालयन, काराकोरम, लेजर हिमालयन। जो ऑप्शन आपको दिया गया है वहां से चुनना होगा, शिवालिक, ग्रेटर हिमालयन, काराकोरम और आपका लेजर हिमालयन। सो डेफिनेटली दिस इज द काराकोरम रेंज जो है वो नहीं है। द हिमालयन आर जनरली डिवाइडेड, काराकोरम आपका अलग रेंज में है ना, जो ऊपर है सबसे, and into 3 range which is the Sivalik, Greater Himalayan or the Lesser Himalayan, and the Karakoram or the Karakoram is large mountain range and spanning the border of Pakistan, India and China with the northwest extremely of range of extending to the Afghanistan and Pakistan. So definitely option 3 Karakoram is the right answer. Next another question, which of the following tribes is not found in central India? कौन सा ट्राइब है जो कि सेंट्रल इंडिया में नहीं दिखाई देती हैं? याद रखेंगे, इज नॉट लिखा है, इज नॉट फाउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया? मध्य भारत में कौन सा जनजाति ट्राइब जो है नहीं दिखाई देती है? गोड़ जनजाति, टोडा, भील, मुंडा। डेफिनेटली देयर आर द Toda is the correct answer. Toda tribes is not found in the central India. Toda tribe is most ancient, बहुत पुराना unusual tribes of the Nilgiri hill of the Tamil Nadu, and Toda have their own language. So Toda जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती, तो Toda is the correct answer. And next another question very interesting, who is of the following junction point, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटी प्रदेश है उसको जंक्शन पॉइंट को कौन सा हिल बसी हुई है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जंक्शन हिल, जंक्शन पॉइंट जो पूछ रहे हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में,
जावादी हिल, Annamalai Hill, Nilgiri Hill, or Sivari Hill. So very interesting. Must will comment. Basically there are the Nilgiri Hill जो हमारे साउथ इंडिया में है, वो बेसिकली ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ती है, और नीलगिरी हिल इज द जंक्शन पॉइंट है, जिसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के. एंड द ईस्टर्न घाट आर discontinuous and range of mountain along the Indian eastern coast, and whereas western ghat, also known as the Swadri, is the mountain range that run parallel to the western coast of the Indian peninsula. So, Eastern Ghat and Western Ghat meet there at the Nilgiri Hill in Tamil Nadu. So, carefully remember. And next, another question, very interesting. Which of the following is correct sequence? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एनटीए नेट में एवरी ईयर पूछते हैं, करेक्ट सीक्वेंस पूछते हैं, तो इसको याद रखना होगा. यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, उत्तरी दिशा से, गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, उत्तर दिशा से साउथ में इसको करेंट सीक्वेंस आपको करना है. नल्लामलाई हिल, नीलगिरी हिल, जवाडी हिल, अन्नामलाई हिल, ये जो चार हिल है उसको आपका उत्तरी दिशा से आपका नॉर्थ एंड ऑन गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, नॉर्थ के साउथ के दिशा में कौन कौन सा हिल्स है आपको सीक्वेंस बनाना होगा. इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको इसमें जो लग रहा है यहाँ पे सही जो सीक्वेंस है वो नल्लामलाई हिल्स, जावेडी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स. काफी इंटरेस्टिंग है. NJNA इसको याद रखेंगे शॉर्ट में, NJNA अर्थात एन मतलब नल्लामलाई हिल, जे मतलब जावेडी हिल्स, एन मतलब नीलगिरी, और फिर ए मतलब अन्नामलाई जो हिल है. तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन द hill station from the north and doing towards the south are the Nallamala Hills, Zavadi Hills, Nilgiri Hills, and Annamalai Hills. So there another question very interesting. Saddle peak, very interesting question. इस टाइप और भी दूसरा पेग को पूछ सकते हैं. Saddle peak, the highest peak of Andaman and Nicobar Island is located. कहाँ पे है ये? अंडमान में तो है, लेकिन कौन सा अंडमान में है? सैडल पेग जो है हाईएस्ट पेग ऑफ द अंडमान निकोबार आइसलैंड में है. ये कौन सा है? निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, मिडिल अंडमान में है, या लिटिल अंडमान में है, या नॉर्थ अंडमान में है? ये आपको बताना होगा कौन सा अंडमान में सैडल पेग देखने को मिलती है. हाईएस्ट पेग ऑफ द अंडमान एंड निकोबार जो है यहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार में है, कि आपका मिडिल में है, कि लिटिल में है, कि नॉर्थ में है? सो डेफिनेटली नॉर्थ अंडमान में सैडल पेग दिखता है. Saddle Peak is the highest peak is the Bay of Bengal, and Andaman and Nicobar archaeological. It is the elevation, and elevation is about 732 meter and lies the North Andaman. So definitely the correct answer North Andaman. Another question very interesting, very interesting. This type of question very interesting. Which of the following gives the correct match of the state and consequence of the religious group? Very interesting. कौन सा करेक्ट है जो कि रिलीजियस ग्रुप के साथ मैच करता है? करेक्ट मैच ऑफ द स्टेट, स्टेट के साथ रिलीजियस ग्रुप. महाराष्ट्र जेरोस्ट्राइन, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश बुद्धिस्ट, राजस्थान एंड गुजरात जैन्स, सिख क्रिस्टान. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखना होगा. इस तरह जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको याद रखना होगा व्हिच ऑफ द करेक्ट मैच द स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, जो रिलीजियस ग्रुप है उसके साथ कौन सा है? ऑप्शन 3 होगा, 1 2 3. द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मैच द स्टेट एंड द कंसर्न ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, द महाराष्ट्र जेरोस्ट्राइन एंड महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश in the Buddhist, and the Rajasthan and Gujarat the Jain. So option 3 is the correct answer. 1 2 3 is the correct. क्वेश्चन को मैं एक बार दिखाता हूँ. यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट है, अर्थात 1 में आपका महाराष्ट्र जेरोस्ट्राइन आपको सही है, 3 में राजस्थान गुजरात जैन सही है, और 4 में सिख क्रिस्टान जो है सही है. अर्थात यहाँ पे यहाँ पे जो आंसर है 1 2 3 जो है सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडियन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री. आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा. सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है भारत में, जिसमें सातपुरा, नीलगिरी, बिंधन, अरावली में? ये तीनों जो आपको 4 जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ओल्डेस्ट यहाँ पे जो है वो है यस अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया
according to geographical history, the Aravalli range and the eroded stuff, the ancient mountain also. It is the oldest range of the fold mountain in India, and the natural history and the Aravalli range date the back the time and when the Indian plate and was the separate from Eurasian plate by the ocean. Very interesting. Must carefully remember the Aravalli range and the eroded stuff the ancient mountain, and it is the oldest range of the fold mountain of India. And the natural history of the Aravalli range date back two times and when the Indian plate was separate from the Eurasian plate by an ocean. Very interesting question. Next, another question. India share it is the border China along the Himalayan range. जो चाइना along the and who is following the state touch the border of China. जो चाइना से बॉर्डर में टच करता है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. इंडिया शेयर इट इज द बॉर्डर, भारत से बॉर्डर शेयर करता है चाइना में along the Himalayan region में कौन सा एरिया है जो चाइना को शेयर करता है. which is the following state touch the border of China. पंजाब, हरियाणा, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, Chhattisgarh. So definitely it is the answer is the Arunachal Pradesh, and there the Arunachal Pradesh touch the border of China, and Arunachal Pradesh border the state of Assam and Nagaland, and to the south and near the international border, and the Bhutan in the west and Myanmar in the east, and the separated from China in the north by the McMahon line. So definitely their option 3 is the correct answer. Next another question, the Kudappa range. ये काफी इंटरेस्टिंग है. कुडाप्पा रेंज जो है वो कहाँ पे है? कुडाप्पा रेंज गोदावरी पालकोंडा रेंज के बीच है, या गोदावरी एंड जमशेदपुर में है, या पालार एंड कावेरी में है, या सातपुरा एंड आपका महादेव मोइकाल रेंज में है? कुडाप्पा रेंज बिटवीन कहाँ पे कुडाप्पा रेंज दिखता है? तो कुडाप्पा बेसिकली गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज जो है वहां पे दिखता है कुडाप्पा रेंज. एंड ये alternately spread the Kudappa. It is the city Rayalaseema and the region of the south central part of Andhra Pradesh, India. It is the district headquarter, and their Kudappa district also. And so, which another question? Which one of the following group and comprise of state sharing border and with the Chhattisgarh basically? Basically, they are Andhra Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, and Odisha. यहाँ पे जो ग्रुप कंप्राइज ऑफ द स्टेट शेयरिंग द बॉर्डर, इसको याद रखना होगा. यहाँ पे जो दिख रहा है सही जवाब जो होगी यहाँ पे वो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा. बेसिकली द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज द स्टेट शेयरिंग बॉर्डर. छत्तीसगढ़ आर द आंध्र प्रदेश एंड द झारखंड एंड महाराष्ट्र एंड उड़ीसा इज द करेक्ट. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. एंड अनदर कोंकण कोस्ट स्ट्रेच. कोंकण कोस्ट कितना दूर विस्तार है? गोवा कोचीन तक, गोवा एंड मुंबई तक, गोवा एंड दमन तक, गोवा एंड दीव तक. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कोंकण कोस्ट जो है हमारे वो स्टेज बिटवीन गोवा से कोचीन, गोवा और मुंबई, गोवा दमन, गोवा एंड दीव. Definitely there are the Goa and Cochin answer is the correct answer. The Konkan coast is between the Goa and Cochin, and also the Konkan also called the Afanta and coastal plain of the western India and lying between the Arabian Sea west and the Western Ghat east. So definitely option 1 is the correct answer. Next very interesting question, who is of the following SARC member में HDI rank in the following whole group? India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan. Very interesting question. Who is of the following SARC member has best HDI rank? HDI रैंक में कौन आगे है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान में सबसे आगे कौन है? वो है श्रीलंका. आपको बता दूं सार्क में जो HDI इंडेक्स है सबसे आगे श्रीलंका है. और यहाँ पे ऑल द मेंबर ऑफ द सार्क हैव HDI रैंक अबव द 100, बट श्रीलंका इज द ओनली मेंबर ऑफ द सार्क and who is the HDI index below their 100? Their Sri Lanka 73 basically. So there are the Sri Lanka is the correct answer. Next another question, who is of the following SARC member has the highest population? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा देश में है? अगर बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल में बात करें या अफगानिस्तान में बात करें, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका आंसर है पाकिस्तान, जो कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री अमंग द सार्क बट नेशन, बट
As per the option given in the question, Pakistan is the most populous country who is has in population दिया गया 2018 के अनुसार। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में आपको आंसर देना होगा। एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ द शार्क इन दिस ईयर, 2016-17 में क्या थीम था, आपको बता दूं 16-17 में शार्क का जो थीम था वो क्या था। ईयर फॉर गर्ल्स, ईयर फॉर एनवायरमेंट, ईयर फॉर गुड गवर्नेंस, ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कौन सा थीम था शार्क में 2016-17 में। जो थीम था वो है ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज जो है आपका थीम था शार्क के। जो शार्क थीम फॉर 2016-17 वाज ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। एंड ईयर फॉर गर्ल्स वाज द थीम था 1990 में था। याद रखेंगे ये जो है साल वाइज 1990 में गर्ल्स था, उसमें ईयर फॉर गर्ल्स 90 में, ईयर फॉर एनवायरमेंट था 1992 में, एंड ईयर ऑफ गुड गवर्नमेंट जो था वो 2000 आपका 8 में। इसको याद रखेंगे। सो ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज वो आपका सही आंसर होगी 2016-17 में। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। एशियन से ये जुड़े नहीं है मेंबर, कौन सा कंट्री, इसको याद बताना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। बेसिकली इसमें लाओस, कंबोडिया, फिलीपाइंस और मॉरिशस, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। जरूर कमेंट करें, लाइव चैट ऑन है। कौन सी कंट्री है जो कि एशियन कंट्री से इसका मेंबर में नहीं है। यस, ये है आपका मॉरिशस जो है। ये बेसिकली देयर आर द 10 मेंबर इन द एशियन। द नेम आर द फॉलो, याद रखेंगे जो मेंबर कौन कौन है आपका एशियन में। वो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालয়েशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लोएस एंड ब्रूनेई। सो मॉरिशस उसमें नहीं है, तो ये इसीलिए इसका आंसर का सही जवाब होगी मॉरिशस। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन। एशियन का हेडक्वार्टर कहां पे है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे बाली, जकार्ता, सॉरी मानिला, सिंगापुर, कहां पे हेडक्वार्टर है एशियन के, जरूर कमेंट करें। बाली में है, जकार्ता में है, मनीला में है, सिंगापुर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आंसर जकार्ता होगी। देखते हैं, हाँ सही जवाब जो है जकार्ता है। ये द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन इज इन जकार्ता। इंडो आपका इंडोनेशिया, इट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिव्स इन द कैपिटल ऑफ each country. The post of secretary general of the ASEAN and rotate among each members country अल्फाबेटिकली आफ्टर द एवरी 2 years चेंज होते रहता है। तो जकार्ता में है। और नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन जाने से पहले हमारे क्वेश्चन सेशन खत्म हुई है, और आज इस सेशन में हमने कल्चरल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी और पॉलिटिकल जियोग्राफी और उसके साथ जो एमसीक्यू, एनटीए नेट जियोग्राफी, ये जो क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने आज मैं रखा काफी इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि ये जो आपके सामने आज के जो सेशन में बेसिकली हमने एक प्रयास किया ताकि अपने फुलफिलमेंट अच्छा से स्टडी कर सके, आप आगे जाके अच्छा से नेट एग्जाम दे सके। और मेरे चैनल में सिर्फ नेट एग्जाम नहीं, पीएचडी का गाइड का भी वीडियो हमने कर रहे हैं। और काफी कमेंट आ रहे हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पीएचडी आफ्टर नेट सेट के बाद जो आपको वीडियो चाहिए कि हम किस तरह रिसर्च में आगे जा सके, वो वीडियो भी हमारे चैनल में है। अगर आप नया है जरूर चैनल के व्यू पेज में जाए और उसको लोगो में टच करेंगे, व्यू चैनल में जाएंगे तो और भी अनदर जो वीडियो है वो देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे चैनल बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है। ओनली 18% जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो पूरा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, उस बटन को प्रयोग करें ताकि आपको अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और सारी सुविधा मिलेगी। मैंने कल ही एनालिटिक्स देख रहा था कि 18% लोग ओनली सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के रखे हैं, और जबकि दिन भर 300-400 लोग चैनल में आते हैं और देखते हैं वीडियो, लेकिन वो रोज देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, वॉच टाइम भी हमको मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा नहीं जाएगी और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगी। तो जरूर सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है लाइव में। और मैं
कमिंग सेशन में एवरी संडे का जो 7 बजे का सेशन वो चलते रहेगा, या नेट का हो या पीएचडी का हो, वीडियो आते रहेगा और अपलोड वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आज के सेशन में सोशल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी काफी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन से चर्चा की है कि किस टाइप क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और किस टाइप हमने आंसर देना चाहिए और उसमें हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगी और कमिंग सेशन भी अच्छा सेशन मैं ला रहा हूं, जरूर आप देखिएगा। और आप इसके साथ नेट एग्जाम, बहुत सारा मेल आया है, बहुत लोग जीआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं लास्ट नेट एग्जाम में। सबको बधाई कि आपने आगे जाके बहुत आगे बढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे और प्रोफेसर जरूर बनेंगे, क्योंकि आप नेट पास हो गए हैं, सेट पास हो गए हैं, तो जरूर आप एलिजिबल हो गए कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और अगर आपका सपना है तो इस फील्ड में जाना है, रिसर्च करना है, वो भी आप आगे जा सकते हैं। तो नेट की तैयारी के लिए आपको किताब को अच्छे से पढ़ना होगा और पैटर्न आपके सामने हमने रखा आज कि किस किस पैटर्न, किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। काफी स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, काफी मैचिंग क्वेश्चन आता है, काफी एक लाइन में क्वेश्चन रहता है, काफी 25 लाइन का क्वेश्चन रहता है। तो एक सजेशन आपको मैं दूंगा कि क्वेश्चन आप बार बार पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार रीड करने से क्वेश्चन को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। और उसी हिसाब से हम आंसर को जब देखेंगे ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं आपको सामने सही जवाब जो है वो आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप परीक्षा देने के जो टिप्स ट्रिक्स हैं वो भी हम वीडियो ला रहे हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इज नॉट, मैंने कई जो नेट एग्जाम देते हैं उससे हमने देखे इज नॉट को भूल जाते हैं, क्वेश्चन में इज नॉट लगा रहता है और हम उसमें क्या है जो है उसी को टिक करके आ जाते हैं। हम देखते नहीं कि नहीं है पूछ रहे हैं या है पूछ रहे हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि नेट एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, और किताब को जरूर पढ़ें ताकि इन फ्यूचर में आपको आगे जा सकते हैं और अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। तो टाटा, जय हिंद। फिर मिलेंगे कोई अच्छा वीडियो के साथ। आज इस सेशन में आपको जितना मैं प्रयास किया, यहाँ पे कमेंट आया है, अरे धनेश सर का कमेंट आया है, एक्सलेंट क्वेश्चन कलेक्शन। थैंक यू धनेश सर, यू आर नेट क्वालिफाइड कंप्यूटर साइंस। आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत आगे आपका फ्यूचर और आगे बढ़े और आपने इस फील्ड पे और आगे नया नया रिसर्च भी करते रहेंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस में नेट क्वालिफाइड कर लिए। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे ब्रॉड में आया। तो आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले संडे कोई अच्छा टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।